the 7 days workshop on agricultural research, entrepreneurship, and skill development for a nation's growth. This program is jointly being organized by Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, and Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems which related to food and agriculture. To achieve these goals, it is actively involved in the creation and manufacture of microbiological and biotechnological substances and molecules, gaining respect both domestically and globally in the field of scientific publication. Vital Biotech aims to publish top-notch, progressive, peer-reviewed research articles, whereas Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, serves as a spiral between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organizations, and corporate entities. It is a spherical organization of agricultural professionals and related sectors in India. It provides a common platform for various agriculture professionals like professors, associate professors, assistant professors, PhD scholars, students, mystics, experts, and researchers working in various scientific institutions across India and abroad. Under the auspices of AFTFS Kota, Vital Biotech Education Group is aiming to increase the capacity of the agricultural and related industries by filling up skill shortages and upskilling the current and future workforce. We collaborate closely with all parties involved in agriculture to enhance the standard of living for researchers, professionals in the workforce, farmers, and farm and extension employees. Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram, Haryana, India is a premier institute under Dashmesh Educational Charitable Trust founded in 1999. SGT University is one of the best private universities in Delhi NCR, India, with a rich legacy of excellence in research, innovation, and skill development. The Faculty of Agricultural Sciences at SGT University, established in 2016 and 17, is offering, besides others, courses of BSc Honours in Agriculture, MSc Agriculture and Agronomy, Horticulture, Vegetable Science and Plant Pathology, and PhD in Genetics and Plant Breeding, Horticulture, Agronomy, and Soil Sciences in the Department of Agriculture. The faculty emphasizes innovative learning, critical thinking, and a more holistic approach to experiential discussion-based and analysis-based learning. I would also like to announce our knowledge partners for this program: Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur; Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana; Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow; Central Agricultural University, Imphal; University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka; University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka; and Agrosphere e-newsletter. Also, I congratulate the entire organizing team for organizing this insightful training program. Today, we are highly privileged to have such honorable dignitaries among us. It is a matter of great pride for us today that we have Dr. Birendra Kumar. Dr. Birendra Kumar is a distinguished chief scientist and nodal head of the Seed Quality Lab on medicinal and aromatic plants at Plant Breeding and Genetics Resource Conservation Division of CSIR, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow, Uttar Pradesh, India. His area of specialization lies in crop improvement through plant breeding approaches and the development of seed quality standards in medicinal and aromatic plants. Additionally, Sir holds position of professor in Academy of Scientific and Innovative Research under CSIR, New Delhi. And Sir has completed his BSc in Botany and his PhD from Lucknow University, MSc from Allahabad University. Throughout his illustrious career at CSIR CMAP, Dr. Birendra Kumar has held various scientific positions, showcasing his expertise and dedication to botanical research. He commenced his journey as a scientist B on August 4, 1995, and has since progressed through roles such as Scientist C, Scientist E1, Principal Scientist, Senior Principal Scientist, and currently serves as Chief Scientist from the 4th of August 2019 onwards. Dr. Birendra Kumar is also a life member of several professional bodies, societies, and academies, including National Academy of Sciences, Allahabad Indian Society of Genetics and Plant Breeding, New Delhi, Indian Society of Plant Genetic Resources, New Delhi, and various other spanning genetic, plant breeding, and medicinal and aromatic plants. He has been honored with many awards, including Lifetime Award, Distinguished Scientist Award, Menthol Min CSIR Technology Award, Golden Peacock Eco Innovation Award, and CSIR Award for S&T Innovation for Rural Development in recognition of his outstanding contribution in the field of genetics and crop improvement. Dr. Kumar holds a position as a principal investigator in total of 21 sponsored projects in the field of medicinal and aromatic plants. He has delivered more than 40 oral presentations and published 65 papers in various seminars and symposia.
He has guided 20 MSc MTech students and 6 PhD scholars. Dr. Kumar's prolific research contributions include more than 100 research papers, 10 review papers, 5 book chapters in different reputed journals. Additionally, he has authored 50 articles in various CSIR and ICR magazines and 8 technical bulletins. As principal plant breeder, Dr. Birendra Kumar has made notable contribution to development of 3 high-yielding varieties, namely CIM Patra, peppermint, CIM Mohawk spearmint, and CIM Suras peppermint. In addition to his role as principal investigator, Dr. Kumar has been an active team member, dedicating his expertise to development of a total of 29 high-yielding varieties of medicinal and aromatic plants, and his proficiency has significantly impacted the successful breeding and release of these varieties, with a primary focus on enhancing productivity and ensuring quality of this vital sector. Dr. Kumar's significant contribution extends to a realm of intellectual property, with a total of 6 patents granted from both Indian and foreign authorities. These patents encompass groundbreaking innovations in various medicinal crops. Sir, your achievements are endless and spectacular, and we are unable to enlist them all in such a short time period. I wholeheartedly welcome you and would like to hand over this virtual stage to you. Over to you, sir. Sir, can you please unmute yourself? Are you audible? Hello? Audible, Yes. sir. Audible? Audible. Okay. Good evening to all of you, and thank you for giving a nice introduction for me. And we here we sharing some our knowledge to our audience regarding mint technology for agripreneurship development. Next slide, please. Next slide, please. There are several types. Mints means there are many species of mentha having aroma or flavor, especially containing menthol. Sorry to interrupt, sir. Can you please share your presentation in bilingual mode, sir, please? Hindi and English, sir. Hindi. Okay, sir. Hello? Sir, if it's possible, can you please present in bilingual mode, Hindi and Yes. English together? Yes. Yeah. Thank you, sir. There's no problem. No problem. But our slides are visible. Yes, sir, it is visible. Okay. And there are several mentha species like mentha arvensis, mentha pepreta, and mentha citrata, mentha spicata, and mentha cardiaca. And these species have various kinds of chemical constituents like menthol, carbon, linalool, linyl acetate, etc. Next, please. And these species have various commercial uses, like menthol mint used in the cup syrup and chewing gum, pan masala. Even then it is used in the confectionery and perfumery industries. Peppermint used as the confectionery, peppermint used in the chewing gum, cup syrups. But spearmint and mentha cardiaca both have used as a confectionery items for the making pasties and other things, chewing gums. And bergamot mint used for the especially for the perfumery industries, having linalool and linyl acetate. Then next, please. And these mentha arvensis, mentha pepeta, both have similar chemical constituents like limonene, 1,8-cineol, menthone, menthol, methyl acetate, and polygon. But in case of mentha pepeta,
only one chemical constituent, that is menthopuran, is different from a high chemical marker used for the differentiation between the mentha-arborescens and mentha peperata. But mentha spicata and mentha cardiaca, that is scotchment and spearmint, both have the major chemical constituent carbon and limonene. And in case of bergamot mint, this the linalool acetate is a major chemical constituents. And if you see the oil content of these crops, menthol mint have uh, 0.8 to 1% oil content. Even then, it has 1.2 percent oil content in recently developed variety Simunati. And in case of mentha piperata, that is peppermint, 0.3 to 0.5, in spearmint 0.4 to 0.6, and bergamot mint 0.4 to 0.6. Next. And these crops, based on agroeconomic feasibility, suitable for the commercial cultivation at that places where good fertile soil is there, जहाँ अच्छी soil हो, small farmers of that area, जहाँ छोटे छोटे farmers हों, जिनकी अपनी घर की फैमिली खेत में काम करती हो, जहाँ पे ड्यूरिंग समर पीरियड्स पेट्स वाइल्ड एनिमल्स का ज्यादा प्रकोप, ज्यादा आक्रमण हो, and irrigation facility is sufficient because it grows in the as a summer crops, and it is used as a transplanted crop in the season. And for this for the cultivation of these mint species, various varieties have been developed by CMAP. In case of menthol mint, that is Kosi, Kranti, and Simunati. In case of peppermint, Kukrail, Tusar, Maduras, and Sumsuras. And Siminda Sim Patra is a menthopuran rich varieties, while Kukrail, Tusar, Maduras, and Sumsuras is having a less than about 5% menthopuran content. This is sweet ordered. While in case of spearmint, that is 6 varieties, 5 varieties, MSS5, Arka, Nira, Nirkalka, and recently developed Mohawk varieties. And in case of bergamot mint, that is Mentha citata, only one variety is Kiran. Next, please. And in these varieties, generally Mentha arborescens, suckers are used for the cultivation of as a planting material for the cultivation. But in case of peppermint, spearmint, or bergamot, even then scotch mint, only suckers are using as a planting material for the commercial cultivation. And if you see, these are the when we cut the suckers in this very small portion, like with at the size of 2 to 3 nodes, and we raised in the well prepared field for developing the plantlets. And जब इस तरह से plantlet बन जाते हैं तो उनको जो है we can use as the planting material for the commercial cultivation. एंड मेंथोल मिंट को जब डायरेक्ट प्लांटिंग करते हैं तो बेस्ट सीजन होता है जनवरी फरवरी, while in case of transplanting it can be used in the March April after harvesting of potato, lahi, and even then wheat. And in the case of the peppermint generally used in the as the direct planting in the month of January February, but only one variety, that is Simsurus, has ability to cultivate either through suckers in the month of January February or through transplanting in the month of March April. Similarly, Simmohak of the spearmint variety, it has also a dual purpose. It has a suckers, and it can be grown as direct planting in the month of January February, and when it can be cultivated through transplanting technology, it in the month of March or April. And for the sucker production,
for menthol mint, peppermint, spearmint, bergamot mint, scotch mint, that is the best time is September, October. Next. And this is the planting method. If we show the direct planting by the suckers, this is the method. You आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फरो बना करके थोड़ा सा करीब 2-2.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं, उसमें जो है डायरेक्ट जो शक्कर होता है 3 नोट्स के साथ कटिंग बना करके उसको यहाँ पे हम इंड टू इंड लगाते हुए इसकी डायरेक्ट प्लांटिंग कर देते हैं। और कभी कभी इसकी नर्सरी बना करके, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ नर्सरी बना करके हम ये प्लांटलेट्स तैयार कर लेते हैं। इससे भी हम इसकी कल्टीवेशन हम कमर्शियल करते हैं। और अगर आप देखें कि जो है these mint species, especially Mentha arvensis and Mentha peperata and spearmint and Mentha citrata, 4 species are cultivated especially in the tropical and subtropical areas, climatic conditions in the throughout the India, especially UP, Punjab, Bihar, Jharkhand, many places. And in case of menthol mint, the best variety is Kosi, Kranti, and Simonti. And the sowing time of these varieties are January to March, when planted by suckers. If they are planted through transplanting methods in the month of March, April, and total irrigation required about 10 to 14. And first cutting of the crop taken in the month of May, and oil yield gets about 120 kg per hectare. And in the second cutting in the month of July, about 200 kg per hectare oil yield. And if we see the cost of cultivation, 40 to 65 thousand per hectare, and net returns is 68 to 1,15,000 hectare per year. Next, please. Next. Recently, CSIR CMAP has developed one technology, that is early mint technology, for the enhancing productivity of menthol mint. And it is a very good agro techniques, having innovative techniques, methods or process applied in the early stage of mint cultivation and production. And it involves the utilization of advanced agricultural practices like precision planting, optimized irrigation system, soil management, early pest and disease detection method to enhance mint yield, quality, overall farm productivity. Next, please. Where we grow the menthol mint, and what is the major problem for the cultivation and production of the menthol menthol? That is one, that is the lacking of the crop period, that is due to variability in preceding succeeding crops, and high water requirement during summer seasons, and low possibility of second cuttings because the unplanned and unplanned जो है rainy seasons, and most expenses on weed management, and problems caused by availability of excess water in standing crop due to onset of rains during second cuttings, and reducing market rates because the arrival of the synthetic menthol in the market. Next, please. And no. This thing earlier slide, please. One earlier, yes. And what is the component of earlier planting material?
First, this is the new method for production of planting material, that is sucker shoots. In this case, the planting of old plantlets on both side of ridges. Actually, early technology क्या है कि इस पे रिजेस एंड फरो बनाकर, रिजेस बना करके, मेड़ बना करके, उसके जो मेड़ बनाने के बाद मेड़ के जो दोनों साइड्स होते हैं उन पे प्लांटलेट्स को लगाए जाते हैं, और न्यू मेंथॉल रेजिंग सीडलिंग। और दूसरी चीज की जब शक्कर से जो है सीडलिंग रेज करना होता है, उसको पॉली हाउस में या पॉलीटनल बना करके उसको करते हैं। और दूसरा न्यू मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, इसमें क्या करते हैं कि रीज के ऊपर प्लांटिंग करते हैं, और इसका जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, और ताकि जो है विथ डिले इन प्लांटिंग। And preparation before harvesting, precaution to be taken at the harvesting at initial wilting point, and distillation by use field distillation unit. Next please. And next please. Yeah. And this is the new method of the sucker production. This is the plantlets obtained from old plantation. This is a transplanting method. This is sucker crops ready for digging, and this is the sucker obtained by, this is the new methods. Next please. Next please. Yes. And if you see the sucker productivity and compare with traditional method for the sucker production and through the EMT methods, sucker production generally in September October month, but in case of EMT, it takes about 150 days, while traditional crops have traditional method have 180 days. And disease infestation in EMT, they are nil, about nil, and average yield per square meter about 1 to 10 kg per meter square, while in case of EMT 2 to 3 kg per meter square. And area required for 100 kg suckers in case of traditional 60 to 100 meters square, while in EMT about the half, 40 to 50 meters square. And in case of EMT, in case of the traditional method, we cannot get any oil from the crop. And in case of EMT, about 50 to 60 kg oil can be obtained as a additional benefit from the EMT technology. And when we calculate the cost of sucker production for 1 kg, that is 7 rupees, while in case of EMT is 3.5 kg. And what is the advantage of EMT over the traditional methods is reduction in cropping period, that is 20 to 30 days in single cutting and 30 to 5 days early in double cutting. And productivity economic returns are better in second cutting. Water requirement reduced about 50 to 30%. Reduction in losses caused by untimely availability of excess water and in extending crop. Reduction in incidence of cost weed management, and reduction in the cost of seed drying, labor, fuel, and water requirement for processing. Next, please. Next, please. When we compare its productivity, oil productivity and economics between the traditional method of cultivation and EMT methods of cultivation based on single harvest and double harvest, when we compare on the based of single harvest, we get cost of net return about 75,000 in case of traditional method, while in EMT about 1 lakhs, that is 25,000 net benefit if we adopt EMT technology. And cost of per kg oil production is about 465 rupees per hectare, but in case of EMT, that is 334 rupees.
When we compare in the double harvest, generally in traditional methods, rains are comes and sometimes whole crops are failure. But in case of EMT, we planted in early and on the ridge, the जो पानी मान लीजिए अगर बारी पानी बरसता भी है तो रिज पे होने की वजह से क्रॉप को डैमेज नहीं करता, पानी निकल जाता है और हमारा जो नेट रिटर्न है जहां हमें 1 लाख के आसपास मिलता है वहां हमें 1.5 लाख से ज्यादा हमें उसमें हमको आमदनी मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर हम इसको इनपुट के रूप में देखें कि ईएमटी में कितना इनपुट होता है, तो अगर सिंगल हार्वेस्ट में अगर देखेंगे तो हमारा करीब 20 से 30 दिन हमारा टाइम कम लगता है सिंगल हार्वेस्ट करने में, मतलब इतना दिन अर्ली अर्ली हमको क्रॉप मिल जाती है। और सेकंड हार्वेस्ट के लिए 30 से 50 दिन अर्ली हमको मिलता है। अगर इरिगेशन की बात करें जहां हमें 10 से 14 इरिगेशन मिलता है, उसमें हमें 25 से 30% इरिगेशन कम लगेगा। अगर वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वीड मैनेजमेंट भी हमारा करीब 25 से 30% कम लगेगा और इसमें लेबर भी हमारी कम लगेगी। और जो फ्यूल है, फ्यूल भी करीब 30% हमें लेस मिलेगा। ये सब जो डिमांड्स है ये डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन। नेक्स्ट प्लीज। एंड इन द gist, importance EMT technology has a very important technology it used for the production of the menthol mint and increasing productivity about 20 to 30% more yield in the essential oil। एंड जो हमारा आजकल सिंथेटिक मेंथॉल की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ईएमटी के थ्रू एसेंशियल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा करके उस चैलेंज को हम डिफीट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड में हाई इनपुट लो आउटपुट है और जबकि अर्लीमेंट में लो इनपुट हाई आउटपुट है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। And in piperita, that is two types of mentha piperita varieties. One is sweet order, that is Kukrail, Tusar, Madras and Pranjal. These are the sweet order. Simpatra and Siminda is the menthofuran rich. Simpatra has about 35 to 45% menthofuran. In case of Indus, that is 10 to 20% menthofuran. And in these varieties, menthofuran is about 5 to 10% menthofuran content. Next, please. And next, please. Recently we developed one variety, Simsurus, and this variety has a very important and unique feature because the mentha, piperita, spearmint, these varieties are cultivated through the runners, but Simsurus variety is grown through the suckers as well as direct planting for suckers, and sometimes it can be grown by the transplanting methods through developing plantlets. And if you see its quality, the menthofuran is about 0.6, less than 1%, and menthol is about 68%. And this variety has yield about 20 to 30% more than the other varieties of the peppermint, and it has a unique feature that after extracting menthol from its essential oil, dementholized oil can be used as a peppermint without substituting menthofuran. It means इसके आम के कहते हैं ना कि आम के जो है इसका
तेल भी इसका जो मेंथॉल निकालने के बाद उसको भी बेच सकते हैं, जो मेंथॉल निकालने क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो बचता है उस ऑयल को पेपरमिंट के ऑयल की तरफ भी बेच सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनको, आपको मेंथॉल का जो कास्ट है वो भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। इसमें एक चीज और है कि इसके पहले जितने मेंथा पेपरेटा की वेराइटीज होती थी उसमें चूंकि ऑयल कंटेंट 0.5% ऑयल कंटेंट होता था, ऑयल यील्ड 80 to 100 kg होता था, लेकिन इसमें उससे ज्यादा भी ऑयल का यील्ड है, 0.6 to 0.7% ऑयल कंटेंट है और 120 से 130 kg ऑयल होता है। तो हम इसको मेंथॉल मेंथॉल मिंट के आसपास इसकी जो है प्रोडक्शन उसके आसपास होने की वजह से हम धीरे धीरे जो पेपरमिंट को हम अभी तक लगाते नहीं थे, हम बाहर से मंगाते थे, आने वाले समय में इस वेराइटी को लगाने से हम जो है मेंथा पेपरेटा के प्रोडक्शन में भी मेंथाल मिंट की तरह आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये आप जो देख रहे हैं स्पीयरमिंट की वैरायटीज हैं। स्पीयरमिंट की वैरायटी में अर्का, नीरा, नीरकालका, MS5 एंड ये सारे की सारी जो वैरायटी हैं, सारे में कार्बोन और लिमोनिन दो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इसमें जो MS5 है इसमें करीब 60% तो कार्बन है, और बाकी में करीब जितने नीरा, अर्का है इन सब में करीब 55 to 58% कार्बन है। नेक्स्ट प्लीज। और नेक्स्ट प्लीज। अभी हमने रिसेंटली जो है इसको एक सिमोहक वैरायटी डेवलप किया थ्रू द इंटरस्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ये आर्बेंसिस और मेंथा स्पाइकेटा के क्रॉस से हमने इसको बनाया। यूनिकनेस है कि इसका आयल, जितने भी स्पीयरमिंट के आयल हैं उनमें जो फ्लेवर है, फ्लेवर कुछ देर के बाद करीब 30 से 35 सेकंड के बाद फ्लेवर उसका खत्म हो जाता है, लेकिन इसका फ्लेवर जो स्वीटनेस है वो मोर देन 1 मिनट तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो आप च्युइंग गम या जो भी खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्वीटनेस जो है, फ्रेग्रेंस, स्वीटनेस का जो फ्रेग्रेंस है, यूनिकनेस, ये आपको लंबा काफी देर तक रहेगा, बाद में इसका बिटरनेस नहीं आएगा। इसलिए दैट इज द गुड वेराइटी फॉर द commercial angles, and it can be used for the small industries for the preparation of chewing gum, other things, other than the rest varieties like Nira, Arca, MS5s. Next please, next please। अब इसके बाद जो है these crops को लगाने के बाद इसको कैसे, इसका कमर्शियल इस्तेमाल तभी इसके एसेंशियल को कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट की फैसिलिटी हो। डिस्टिलेशन यूनिट की फैसिलिटी जब तक नहीं होगा तब तक हम इसके कल्टीवेशन से हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट प्लीज। जिसमें जो है कई टाइप के डिस्टिलेशन यूनिट होते हैं। एक इम्प्रूव्ड फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट है। इस डिस्टिलेशन यूनिट को ज्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं मेंथा की खेती में, लेमन ग्रास के, बेसिल के, वेटिवर। इसके खेती के लिए इस डिस्टिलेशन यूनिट को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो इसमें 1 क्विंटल से लेकर 2 टन तक कैपेसिटी के जो डिस्टिलेशन यूनिट बनाए जा सकते हैं और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये यूनिट जो है मेड अप ऑफ एमएसएस या मतलब एमएसएस या स्टेनलेस स्टील के से बने होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एंड दूसरा डिस्टिलेशन यूनिट है कोहेबेशन टाइप डिस्टिलेशन यूनिट। जितने भी हाई वैल्यूड इसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे जैसे आपका रोज है, जिरेनियम है, लेवेंडर है, ये जो हाई वैल्यूड क्रॉप्स होते हैं जिसके पानी में भी जो इसेंशियल ऑयल पड़े रहते हैं, मेजर केमिकल्स,
उनको भी सेपरेट करने के लिए, उनसे भी इस इसेंशियल ऑयल को निकालने के लिए कोहेबेशन टाइप का डिस्टिलेशन यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। और ये भी करीब 1 कुंटल से 10 कुंटल कैपेसिटी के बैच के बनाए जाते हैं। ये जनरली जितने भी होते हैं सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और इसको जो है, इसकी जो है इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत अच्छा तेल निकल जाता है, इसमें वेस्टेज नहीं होता है तेल का बाहर के की उड़ जाए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। नो नो, अर्लियर अर्लियर प्लीज, इसके पहले, इसके पहले का, मोबाइल से पहले, मोबाइल से पहले, आगे नहीं, पीछे जाइए, पीछे 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 पीछे, और पीछे, और पीछे, हाँ यस। एंड दिस इज द आश्विका पोर्टेबल, ये इसकी छोटी यूनिट होती है। जैसे करीब ये जो है 20 से 25 केजी के लिए 15 कैपेसिटी के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रोज ऑयल वगैरह जैसे बनाना है, रोज ऑयल है, स्पाइसेस से स्पाइस ऑयल, जो छोटे 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 वो लगा सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, कौन? हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। एंड ये जो है, ये क्या है कि कभी कभी कुछ लोग रोज की कल्टीवेशन करते हैं, कुछ स्पाइसेस, जो स्पाइसेस जिनके पास डिस्टिलेशन निकालने की, डिस्टिलेशन लगाने की नहीं है, तो ये हमारा जो जो सिम आश्विका इसको बोलते हैं, ये पोर्टेबल होता है, छोटा होता है। इसको भी आप लगा करके, सस्ता भी होता है, 15-20 हज़ार में आपको ही मिल जाता है। तो आप इससे भी इसको रोज आयल आप बना करके आप इसको नया आप एक इंडस्ट्री बना सकते हैं। तमाम जो है छोटे छोटे लोग जो है ये रोज आयल इससे निकाल करके रोज आयल मार्केट में बेचते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज ए मोबाइल, रिसेंटली हमारे यहाँ अभी मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट बनाया गया है जो ट्रैक्टर माउंटेड है। इसमें क्या है कि कभी कभी होता है कि कुछ किसान जो है एक ही जगह नहर रख करके डिस्टिलेशन यूनिट को दूसरे दूसरे किसानों के यहाँ खेत पे ले जा करके वहाँ डिस्टिलेशन करना चाहते हैं। क्योंकि हर किसान को अपने जो हर्ब है उसको दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है। तो डिस्टिलेशन यूनिट खुद ही उनके यहाँ जा करके उस गांव में गया, इस्टेब्लिश किया, और उस गांव के जितने भी लोग हैं उनको जो है इससे डिस्टिलेशन करके उनसे ऑयल उनको निकाल के दे दिया। और ये इसकी भी कैपेसिटी करीब 4 से 5 क्विंटल पर बैच की है। और ये चूंकि मोबाइल है और इसको किसान लोग कहीं भी ले जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ डिस्टिलेशन यूनिट के जो जैसे जो देसी जो यूनिट्स होती हैं, जो लोग किसान लोग बाराबंकी वगैरह में बनाते हैं, बना के बेचते हैं, इससे हमेशा जो है ये कभी कभी फट जाता है सेफ्टी वाल्व, और एक प्रेशर गेजर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ फंस गया सेफ्टी वाल्व में, तो ये अक्सर जो है ये हादसा हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये आपका कुछ जो एग्रो बेस्ड बॉयलर होते हैं, कुछ इस टाइप की जो है हमारे इसी मैप में है, जो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। ये कुछ आसवनिक आई है, ये उसकी डिजाइन है जो सीमैप बना करके देता है लोगों को कि आप जो है इसके डिस्टिलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं चूंकि आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहेंगे कि एक डॉक्टर एन के पात्रा साहब थे जिन्होंने कोसी वैरायटी मेंथारवेंसिस की डेवलप किया। आज जो भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, सबसे ज्यादा मैंडेज जनरेट करने वाला, सबसे ज्यादा बिजनेस डेवलप करने वाली क्रॉप की वैरायटी को डेवलप किया, तो वो है कोसी। और आज उसी की वजह से हम इंडिया में मेंथॉल मिंट ऑयल के प्रोडक्शन में सबसे
नंबर 1 पे। और उन्होंने जो है उन्होंने सिमिंडस भी डेवलप किया। गुलाब में उन्होंने 2 वैरायटी डेवलप किया, जो नूरजहां रानी साहिबा है, जिसकी कल्टीवेशन आपको इस एरिया में हाथरस और एटा कन्नौज में इसकी खेती होती है। और उनके इस काम की बदौलत उनको जो है सीसाया टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला, और ये एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ने उन्हें एक सोम अवार्ड भी दिया। क्योंकि ही इज माई गुरु एंड टीचर, that's why I am praised to him, and I am highly grateful for his guidance to do all science in the CSIRC map. Thank you. Any query, any clarification? Thank you so much, sir, for this very insightful session. I think the participants are quite enjoying it, and they understood everything. That's why there is no question, sir, raised in the chat box. And as you've mentioned, our respect goes to Dr. N.K. Patraji for his legacy will always live on. And thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge about Mint technology for entrepreneurship development. And I'm sure the participants have gained a lot of knowledge from listening to you, and they get inspired in entrepreneurship too. We wish that you'll be blessed with more knowledge and success in your future endeavors, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, as I am about to close, there is one question by Srinivasa. The question is, sir, what's the cost of a rose oil extraction distillation unit? रोज का ये आपका, अगर आप सिम इफ आप सिम आस्विका में करना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 हजार मिल जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी का आप रोज एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं। आप अगर जो है वो कैपेसिटी के अनुसार करीब 2 लाख से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक की भी है, जैसी आपकी कैपेसिटी और किस तरीके का आप डिजाइन करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। और सीमैप इसके लिए आप कभी भी किसी को क्वेरी चाहिए तो हमारे यहाँ केमिकल इंजीनियर है डॉक्टर सुदीप टंडन, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको इसमें आपकी मदद कर देंगे। Thank you so much, sir, for answering to the question of our participant. So now moving forward, our next guest speaker is Dr. Soumitra Tiwari. Dr. Soumitra Tiwari is an assistant professor in the Department of Food Processing and Technology at Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya in Bilaspur, Chhattisgarh. He has a PhD in Chemical Engineering from Central University Bilaspur, MTech in Agricultural Processing and Food Engineering, and BTech in Dairy Technology. He has received the University Gold Medal in Masters, the Inspire Fellowship from DST, Government of India, ICAR, SRFPG, and many more awards from various institutions. He is a certified assessor in spices and food from the National Skill Development Corporation of India and FSPCA Preventive Controls for Human Food from FSCA, USA. Sir has qualified for the ICAR NET in Post-Harvest Engineering and Technology. He has published more than 13 research publications in international and national journals and more than 15 articles in Hindi and English in different magazines, and participated in more than 25 conferences in India and abroad. We feel honored to have you on our midst, sir, and we can't wait to hear from you. Before I hand over the stage to you, sir, it would be highly appreciated if you can present in bilingual mode, English and Hindi. Okay, sir, with this, I welcome you, and over to you, sir. Thank you, Sailo ma'am. And your name is Vanala Malaya Swami. Vanlalmal Somi, sir. Vanala Swami. That is a very nice name. Ma'am. Thank you, sir. And first of all, to namaste, all of you dear participants of 7 days international training come workshop of this program, and thank you to introducing you, and thanks so much for the Dr. Jitendra Mehta ji who introduced me in this workshop. And most of the participants are from students. So the participants are ranging from farmers, students, researchers, scientists. It's a vast crowd. Okay. Ma'am, my slide is visible to you? Yes, sir, it is visible.
Okay, thank you. So, as a my topic is entrepreneurship and skill development in food processing sector for national growth, as per the title suggested by the Dr. Jitendra ji, and these are some content. So, first of all, we have to understand what is the food processing. If you are going to tell about agriculture, जैसे अब हम agriculture की बात करते हैं, agriculture के जो most of the products होते हैं, that should be a food products. और आजकल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द फूड प्रोसेसिंग. तो इन जनरली प्रोसेसिंग इज द कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म and another form to another form, that is called the processing. We are going to convert one food product to another form. For just like example, rice is a staple food. We can produce paddy in agriculture way. हम लोग धान को उगाते हैं और धान को जैसे हम लोग मिलिंग के द्वारा, मिलिंग इज अ प्रोसेसिंग टर्म. आफ्टर मिलिंग ए यूनिट ऑपरेशन भी है, प्रोसेसिंग सेक्टर है. मिलिंग के बाद में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं चावल के रूप में, दैट इज कॉल्ड राइस, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग. तो ये मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स आर बेसिकली गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन अवर इंडिया, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. देयर आर ओनली प्रोसेस ओनली 2%. इट मीन्स 98% जो बचे हुए चीजें हैं, वहां पे आपको 98% आपकी संभावनाएं हैं काम करने के लिए. एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, एज अ सर्विस के रूप में आप कर सकते हैं. तो मतलब अभी जो सेक्टर स्टार्ट हुआ है फूड प्रोसेसिंग का, वो काफी पीछे Sorry है. to interrupt you, Wari sir, but your presentation is not in full screen mode, sir. Can you please share it in slide share mode? Okay, okay, ma'am. Is it now full screen? Yes, sir, it is now. Thank you. Thank you. तो मैं पार्टिसिपेंट से वो करना चाहता हूँ, कहीं भी वो चाहे बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में मेरा ऑन है, तो मैं आप लोगों को सब बताते रहूँगा कुछ भी. तो कहीं भी आप भेजिए. ऐसा टू वे का हम लोग क्लास में टीचिंग करते हैं तो टू वे ही पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में हम लोग आदत रहती है, अगर कोई कुछ बोलता है तो अच्छा लगता है. ठीक है. तो फूड प्रोसेसिंग मतलब conversion one form to another form, that is called the processing. There are a lot of processing method and lot of techniques right now available due to technological information, AI and information technology. There are vast things. So some food processing include adding components of food, for example extension of shelf life, adding vitamins, minerals, improve the quality, that is called the food fortification. You add additional thing, that is called the fortification. जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ. जैसे कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे अवेयर हैं चीज, आप अवेयर है अपन सब, लेस पोटैटो चिप्स, जो लेस का पोटैटो चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, टेढ़ा है मेरा है करके कुरकुरे करके बहुत बहुत पॉपुलर है ये इंडस्ट्रीज में, जो जंक फूड के रूप में है, जो हम प्रमोट नहीं करते, खाना चाहिए. बट मैं फूड प्रोसेसिंग ताकत बताना चाहता हूँ. आप जनरली बहुत सारे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ इंडिया से हैं. नॉर्थ इंडिया में खासकर यूपी में पोटैटो में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आलू का. आप देखेंगे जब सीजन होता है आलू का, जब वो हार्वेस्ट होता है उस समय उसकी कॉस्ट 2 से 3 रुपए पर केजी के आसपास होती है. और जो आप लोग चिप्स खरीदते हैं 10 रुपए वाला पैकेट लेस का है, जो ग्रीन कर दें चाहे रेड कर दें, या फिर आप और भी किसी ब्रांड में खरीदते हैं, वो जनरली 28 to 35 ग्राम होता है. मतलब आप 10 रुपए में 32-38, मतलब किलो के हिसाब से बात करें तो 300 रुपए पर केजी के हिसाब से उसका रेट होता है. तो 300 रुपए में आप समझिए, जहाँ 3 रुपए किलो आलू मिल रहा है, उस आलू को आप कैसे 300 रुपए पर केजी से 400 रुपए पर केजी के रूप में धीरे धीरे उसको परचेस कर रहे हैं. तो ये प्रोसेसिंग होता है जो आपको 1300 टाइम्स ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है, जो वैल्यू क्रॉप है, इसको हम लोग वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग हमेशा मार्केट में जितनी भी पैकेट चीज लेते हैं, दैट ऑल कंप्राइजिंग अंडर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स. तो देर आर कुछ सब 5 मेजर रीजंस हैं जिसमें आपको कैसे इंप्रूव पॉलिटेबिलिटी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख सकते हैं. जैसे प्रिजर्वेशन फॉर लेटर कंजम्पशन. तो प्रिजर्वेशन क्या है? वी हैव टू एक्सटेंड देयर सेल्फ लाइफ. मतलब सेल्फ लाइफ इज दैट जब आप उसको खाने से पहले आपको फील हो कि वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लाइफ. सेल्फ लाइफ को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं? दैट इज सम प्रिजर्वेशन टेक्निक, जस्ट लाइक ड्राइंग, हीटिंग, मॉइस्चर रिमूवल, हडल टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. इनको हम
सम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं आज की बहुत ज्यादा। जितने भी आप पैकेट जूस आप लोग मार्केट में कंज्यूम करते हैं, उस सब में वो प्रिजर्वेटिव रहते हैं, बहुत सारे एडिटिव्स रहते हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट रहते हैं। ये देखा जाए बहुत सारे कार्सिनोजेनिक भी होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज अ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वी कैन यूज फॉर द enhancing their self life within the permissible limit, रिमूवल ऑफ इनएडिबल पोर्शंस प्रोसेसिंग में कहता है, और डिस्ट्रक्शन या रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जस्ट लाइक पास्चराइजेशन स्टेरिलाइजेशन आप देखते हैं, उसमें क्या होता है डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ inactivation of harmful organisms, and that sterilization the removal of all microorganisms, that is called the removal and destruction of harmful substances, and conversion of form desired by the consumer के हिसाब से easy to use handling product जैसे मैगी है, नूडल्स है, 2 मिनट्स में रेडी हो जाने वाले प्रोडक्ट्स से बना सकते हैं। सब डिवीजन इनटू फूड इंग्रेडिएंट्स, सम देयर आर सम प्रोसेस फूड ब्रांड्स हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं घर पे यूज करते हैं, मेयोनीज हैं, कुकीज है बहुत सारे खाते हैं, अब मैगडी का बर्गर है, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये दिस वैरायटी बताना चाह रहा हूँ मैं। शुगर सिरप है, बीफ है, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है, पास्चराइज मिल्क है, होमोजेनाइज मिल्क है, दही है, छाछ है, आइसक्रीम्स हैं, मीट के प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोसेस मार्केट में है। आप जितने भी सब पैकेट चीजें फूड खा रहे हैं ये सब हमारे किसके अंडर में आते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से आते हैं। तो इनमें थोड़ा सा फैमिलियर बहुत सारे होंगे, अमूल के ब्रांड फैमिलियर होंगे आप लोग। अब बहुत सारे स्कोप्स क्या है देख सकते हैं, द टोटल, क्योंकि हम लोग फूड प्रोडक्शन में बहुत जगह बहुत ही हाईएस्ट है, जैसे कि मिल्क में है, मीट में है, पोल्ट्रीज में है। तो ये क्या इसमें इसमें इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एक आप लोगों ने भी सुना होगा MOPI बहुत ही प्रचलित है खासकर मोदी गवर्नमेंट में, अभी उसको कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया गया है और कैबिनेट स्तर का दिया गया है। तो इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये अभी फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का जो पूरा क्षेत्र है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, और सर्विस सेक्टर में काफी आगे है, बहुत लोगों को रोजगार दिया है, क्योंकि इसमें आजकल इंट्रोड्यूस हो गया है होम मेड चीजें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे इसके रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग से, या जो इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कन्फेक्शनरी के चॉकलेट्स हैं, कोकोआ प्रोडक्ट्स हैं, सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल वाटर है, हाई प्रोटीन फूड्स हैं, सॉफ्ट बेवरेजेस, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फ्रूट्स, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फ्रूट्स बेवरेजेस भी अंडर द फूड प्रोसेस सेक्टर से आते हैं। जितने भी वाइन मिलते हैं, बियर्स मिलते हैं, विस्की, स्कॉच, जिन, रिम, अभी इंडिया में बहुत लीडिंग सेक्टर में है इस क्षेत्र में भी। अलोंग इवन थर्ड पोजीशन है हमारे अल्कोहलिक बेवरेज में इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। Another rapidly rising segment of the food industry which is gaining a vast popularity। आप भी जान रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत पॉपुलर, आप कहीं भी जाएंगे फूड प्रोसेसिंग के बारे में आप धीरे धीरे जो भी थोड़ा बहुत अवेयर है सुनने को मिल रहा है लगातार। एक समय जैसे चॉकलेट बहुत फेमस है, कैडबरी की चॉकलेट आती है, कैडबरी की जो चॉकलेट है उसमें देखना आप मोस्ट ऑफ उसमें चॉकलेट नहीं लिखा है, सिर्फ कैडबरी लिख के बेचा जाता है, क्योंकि जो चॉकलेट की डेफिनेशन उसमें सेट नहीं हो पाते। तो बड़े ही स्टाइल से उन्होंने कैडबरी का लोग चॉकलेट का नाम है कैडबरी याद कर लिए, नूडल के नाम मैगी याद कर लिए। तो उसी में तरह से पॉपुलरिटी दिखाता है कि फूड प्रोसेस सेक्टर कितना है, कि जो ब्रांड का नेम है वो प्रोडक्ट से भी ऊपर होते जा रहा है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडिया को आपको पता ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट हम लोग बहुत सारे में सेकंड आते हैं, वो तो फर्स्ट आते हैं आफ्टर चाइना। चाइना बहुत लीडिंग है हमसे काफी की चीजों में, पर हम लोग प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा लैक है, उससे मैं आगे मैं बात करूंगा क्यों हम लैकिंग कर रहे हैं। इसलिए जितना हम लैक है जितना हम पीछे हैं, दैट इज द एडवांटेज है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। देयर आर some many socio-economical factors that are driving the demand side of a human food processing industry। सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है हम लोग पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं आफ्टर चाइना, तो इसलिए जितनी अधिक पॉपुलेशन हो तो उनकी डिमांड होगी खाने की, और जितनी अधिक हम लोग इवन बिजी लाइफ शेड्यूल है तो कन्वीनियंस फूड की डिमांड बढ़ती है, जैसे पैकेट फूड। इवन पहले के समय में आप कोई भी जो आटा है लोग खुद गेहूं ले जाके पिसा के आते थे आटा चक्की, अब देख रहे हो आटा चक्की गायब हो गई, क्योंकि लोग पिसाने वाले या गेहूं लेके जाने वाले खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फूड प्रोसेस सेक्टर इतना इजी कन्वीनियंट हो गया है कि आप आशीर्वाद आटा हो गया और सिक्का आटा हो गया, कोई भी आप बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। इवन आप गांव में भी जाओगे तो दूध लेने जाओ दूध नहीं मिल पाएगा, पर आपको पैकेट वाला अमूल का दूध जरूर मिल जा रहा है।
तो India holds the number one ranking in producing some of the major product like mango, papaya, banana, milk, ginger, guava, and mass producer sugar है, शुगर कैन का है, कैश्यू नट्स है, पोटैटो है, राइस एंड बीट्स है। तो जितने भी हम लोग ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन करते हैं, उतनी ज़्यादा उसको प्रिजर्वेशन करने में एफर्ट करना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्रोसेस करने में। और जहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो टेक्नोक्रेट के रूप में पढ़े लिखे लोगों की जो ट्रेंड और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसको ह्यूमन पावर बोलते हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो जैसे हम लोग जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे कि स्कोप कैसे है, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड के नाम इसमें लिखे हुए हैं। HUL जैसे पढ़ते हैं आप लोग, बहुत सारे साबुन ले रहे हैं, और बहुत सारे जितने भी 90% खाने की चीज़ छोटे छोटे ले रहे हैं आप, जैसे कि किसान हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और HUL बहुत मेजर है, मेंडलीज है, इंटरनेशनल बहुत ब्रांड है, जनरल मिल्स है, नेस्ले है, जिसको आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, उसकी चॉकलेट बहुत फेमस है नेस्ले की, कैडबरी है। ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसको मैं अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट हुआ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से। जैसे कि सब नेशनल मार्केट है, जैसे निफ्ट, उसमें और क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन है, जैसे निफ्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, जिसके 2 ब्रांचेस हैं, एक तंजावुर में है जिसको पहले IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी करके, अब उसका नाम भी निफ्टम तंजावुर कर दी है, और कुंडली सोनीपत जो हरियाणा के पास में है। दूसरा है CFTRE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर में है ये। और बहुत सारे और भी ऐसे कोर्सेज, जैसे कि IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर में भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एवन PhD और बहुत सारे सब पोस्ट डॉक के भी वहाँ पे स्टडीज कराई जाती है। फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उसके अंतर्गत कराई जाती है IIT खड़गपुर में। इवन IIT अभी गुवाहाटी ने भी स्टार्ट किया है। उन्होंने सैंडविच, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, जो भी UG में होंगे, सैंडविच प्रोग्राम है उनका, जो कि जापान के साथ में है। तो वो 2 साल का है, तो कुछ 6 महीना या साल भर का एक सेमेस्टर का कोर्स उनको जापान में करना पड़ता है। जापान में यूनिवर्सिटी के साथ उनका टाई अप है, और 6 महीने का कुछ कोर्स जापान के जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ पे IIT गुवाहाटी में करना पड़ता है। जो बच्चे PG में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे स्कोप है उनके लिए, वहाँ भी जा सकते हैं वो। उसमें उनको अब्रॉड का भी स्कोप मिल जाएगा PG करने के बाद में। कुछ स्टेट मार्केट के कुछ लोगोज हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपेडा का सुने होंगे नाम, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एग्री एक्सपोर्ट जोन का बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ऐसे बहुत सारे, और खासकर जो अभी मैंने पहले एक बार बताया, MOPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब की स्कीम्स हैं, बहुत सारी लगातार स्कीम, खासकर जो इंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए बहुत सारे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है। अभी किसी भी और सेक्टर में इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि इंडिया जो है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंट्री है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को उनको आगे ले जाना है। जो किसान को, मार्जिनल फार्मर्स है, अभी आप देख रहे होंगे लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। वो जो आंदोलन है, किसानों के लगातार आंदोलन चल रहे हैं कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, पर गवर्नमेंट कहाँ तक बेयर करेगी? अल्टीमेटली जो बियर करने वाला होता है कंज्यूमर बियर करता है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है गवर्नमेंट कि इसको आगे बढ़ाए, और जो फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी कहीं सपोर्ट प्राइस मिले। पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाने से उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिले, जिसकी डिमांड है उसके हिसाब से करें। तो यही हमें कुछ चेंज करने गवर्नमेंट भी करना चाह रही है। इसलिए जो इंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए बहुत सारी यहाँ पे स्कोप्स की संभावनाएं बनती हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों उसमें कुछ काम की चीज़ें मिल जाएंगी। और हम लोग देखते हैं चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, जो चैलेंजेस है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। जैसे कि मेन चैलेंजेस क्या है फेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज द लैक ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कैसा हो रहा है? हम लोग अगर फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे गार्लिक पेस्ट हो गया, ऑनियन पेस्ट हो गया, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि मलेशिया है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत है, कि बाहर से फॉरेन से बहुत सारे घूमने आते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में लोगों को रेडी टू कुक चाहिए, तो ऑनियन का पेस्ट चाहिए, डायरेक्ट गार्लिक का पेस्ट चाहिए,
और जिंजर का पेस्ट चाहिए, तो डायरेक्ट जब हम लोग खाना बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं सेफ, तो उनको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। वो जनरली क्या होता है, फ्रोजन प्रोडक्ट के रूप में, देखिए कि उनमें एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, जिसको हमको कंजर्व करके रखना है। तो फ्लेवर अरोमा कंजर्व करके रखना है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज प्रोडक्ट के रूप में ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनाना हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल हो गए, आप लोग देखते होंगे जम्मू कश्मीर से इवन कन्याकुमारी तक भी जम्मू कश्मीर का एप्पल बिकता है, फॉरेन से भी एप्पल आता है, बहुत सारे गुआवा हो गए, मतलब सेब, जाम हो गए, अमरूद हो गए, ये बाहर बाहर से फॉरेन कंट्री से हमारे पास आ रहे हैं। पर हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी है और हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी है, पर वी कैन नॉट अफोर्ड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज बिकॉज लैक ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए इनसफिशिएंट प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज में बहुत सारी दिक्कत है। अपने पास इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सीजनेबिलिटी ऑपरेशन एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीजनेबिलिटी। जैसे जो प्रिजर्वेटिव की जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मैंगो है, हम लोग हमेशा आजकल मैंगो जूस के रूप में दूसरे वेदर्स में भी, मतलब दूसरे मौसम में भी, जब मैंगो का प्रोडक्शन नहीं है बना, तो हमको मिल पा रहा है। इसके लिए हमको प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों सेक्टर को बनाने के लिए कि हमारी जो हमेशा ये सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो ऑफ सीजन में भी मेंटेन हो सके, इस प्रोडक्ट को हमको करने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत सारी ज़रूरत है, जो कि अभी बहुत सारी इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। हमारे पास में वेयर हाउस बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में। The institutional gap in the supply chain such as a reliance on a lack of consistent quality and safety standards। हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेंड ह्यूमन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसलिए जो क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड जो हमको मेंटेन करना है, वो हम उसको मेंटेनिंग करने में एक हमको ह्यूमन पावर की बहुत ज़रूरत है। लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रिटेल डिमांड, desire for a good that are immediate, ready to eat or cook and save processed food, as well as a reduction in reliance on the cereals and or significant potential for the this sector. Since processed food has an immense export potential, together with the domestic demand encouragement to it, the proper marketing, latest technology in a steady flow of raw material from the farmers, meeting specific quality standard at staple prices lead to greater development of the agriculture sector. These are some, हम लोग पहले से इस पे बात की कि किसमें किसमें हम लोग इसमें आगे हैं। इंडिया फर्स्ट रैंक है, जैसे कि मिल्क है, गुआवा है, बनाना है, पपाया है, जिंजर है, ओकरा है, पल्सेस है, बफेलो मीट है। सेकंड में जैसे पीज है, सीजम्स है, पोटैटोस है, टी है, टमाटो है, इसमें सेकंड पोजीशन पे। तो जो जितनी अधिक डिमांड है उतनी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग प्रोडक्शन और जो कंज्यूमर के बीच का जो गैप है, उसको अगर हमको फिल करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, तो वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ही कर सकते हैं, उसके 10 ह्यूमन रिसोर्स ही कर सकते हैं, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास में बहुत सारे हम लोगों ने एग्रीकल्चर जैसे कि साइंटिस्ट ने काम किया, डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया, बीडी में किया, उन्होंने वीट के प्रोडक्शन को, राइस के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया हरित क्रांति के रूप में। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे भी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रहे हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ रही है, पर हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़े हुए प्रोडक्शन है, इसको हमको यूटिलाइज करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेन ह्यूमन पावर की पड़ती है। ये है हमारा इंडिया सेकंड है, जैसे कि फिश प्रोडक्शन इन द फिश प्रोडक्शन में दो टाइप के होते हैं, मरीन होते हैं और इनलैंड, या फिर स्वीट वाटर फिश प्रोडक्शन बोलते हैं, इनलैंड वाटर। इस पे भी हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप है। इवन जो हमारे कोस्टल इंडिया के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको पता है कि यहाँ पे इसकी काफ़ी डिमांड है। इवन साउथ एशियन कंट्रीज के आसपास में बहुत ज़्यादा हमारे से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं इस समय, और इसलिए बहुत सारे यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है इसको कि कैसे हम लोग फ्रीज प्रोडक्ट करके इसको लंबे समय तक इसको प्रिजर्व कर सके, प्रिजर्व करने के बाद हम इसको सप्लाई चेन मार्केट में इसको पुश कर सकें। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीप मीट इन द वर्ल्ड। सेकंड सीप मीट में भी बहुत आगे है, बफेलो मीट में नंबर 1 है। पैकेज फूड, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि आपको कोका कोला, थम्स अप, हालांकि आजकल पेप्सी सारे एक ही ब्रांड के हो गए हैं, बट
मिल रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखने को मिलते थे। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ओवरऑल सिनेरियो जैसा कि है, हम लोग पहले ही बात करें, सेकंड टर्म से फूड प्रोडक्शन में ग्लोबली नेक्स्ट टू चाइना है। इंडिया फर्स्ट टर्म है मिल्क बनाना में, सेकंड में पीस पोटैटो टी टमाटो में है। इवन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अभी हम लोग नंबर 1 पोजीशन है। जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से हैं, आप लोग जैसे यूपी से बहुत सारे लोग यहाँ पे लगता है मुझे जुड़े हुए हैं। यूपी में एक बहुत फेमस डेयरी है, वो काफ़ी चल रही है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इवन आपका देखें चावल के हैं, चावल पफ का हो गया जिसको मोटरा या लाई बोला जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पोहा मेकिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, राइस मिलिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप ओवरऑल नंबर 1 पोजीशन पे हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्री थर्ड टर्म्स में आउटपुट है प्रोडक्शन में। स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ फूड इंपोर्टिंग नेशंस, हमारा इंडिया को बनाने का चल रहा है। इंडिया नेशनली 4.6 to 15.9% वेस्टेज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जिससे छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, तो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन भी ऐसा है कि लखनऊ से, मतलब लखनऊ के बराबर तो कई यहाँ देशों के पॉपुलेशन ही नहीं है। पर इतना परसेंट हम लोग करीब 16% करीब करीब आपसे फ्रूट्स वेजिटेबल हम लोग हर साल खराब कर रहे हैं। अगर 16% के कास्ट में तो करीब 2,000 करोड़ रुपीस के आसपास में, लाख करोड़ रुपीस के आसपास में इसका वैल्यूएशन बनता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग इजीली भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, हार्वेस्टिंग द्वारा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में इतने रुपए पैसे को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसमें इकोनॉमी की जनरेशन एवं नेशन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। मोreover, the processing level in fruits vegetable currently stand close to the 2% only। मतलब बहुत ही कम है। इवन मैं बोल रहा पहले ही बोला कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में 2% के आसपास ही अभी हम, जैसे कि जैसे कि डिमांड बढ़ती जा रही है। बेंगलोर में कटिंग चॉप वेजिटेबल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेडी टू कुक वेजिटेबल की भी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हमारे यहाँ से इंडियन लोग हैं जो माइग्रेट हो गए यूएस कनाडा एवं अच्छी जगह ब्रिटेन में सेटल हुए हैं, उनको इंडियन फूड की बहुत डिमांड रहती है। खासकर जैसे कि साउथ इंडियन है, रसम बहुत खाते हैं उन लोग, आ, उनके लिए जो मुनगा उनगा भी है, जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं। इसके जो पैकेट में रेडी टू कुक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर में एक्सपोर्ट होते हैं, और हमसे वो कई गुना अधिक दामों में खरीद रहे हैं। वो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या क्या है? स्ट्रेंथ में देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है तभी तो हम उसको जाकर प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने के बाद मार्केटिंग कर सकते हैं और कहीं पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मनी को बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास में है। प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अभी एग्रो प्रोसेसिंग जो सिस्टम्स हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, उसको अभी इंडिया गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बेसिस में रखा हुआ है। प्रायोरिटी मतलब सबसे प्रथम प्राथमिकता दी है, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का चला है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सेटअप बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट। एक डिस्ट्रिक्ट में जिस टाइप का वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन जिस प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, तो वैसे ही इंडस्ट्री डेवलप किया जाए, जिससे कि हम उसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें हम लोग मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड को हम मेंटेन कर सकें, तभी हमारा बाहर में एक्सपोर्ट हो सकता है। वास्ट नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी आज के समय में हमारे कंट्री में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है वास्ट डोमेस्टिक मार्केट। हमारा खुद का नेशन है, क्योंकि हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पे, और हमारे जो साउथ एशियन कंट्री में हम रहने के कारण में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के लोग जो पॉपुलेटेड जगह है वो साउथ एशियन है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सबसे अधिक पॉपुलेशन यहीं पे है। और हमारा जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, हम लोग सबसे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बहुत पास में कनेक्ट होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट अगर किसी के इंडिया के पास में है। इसका भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है वीकनेस, तो ज़्यादा अधिक वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और अधिक है स्मार्ट लोगों के लिए काम करने के लिए। जैसा कि है लो अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे कि हम लोग पहले ही बात करें
हमारे पास में प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, पेपर न्यूज़पेपर में आते होंगे। हमारे यहाँ गेहूँ चावल भी सड़ जाता है। इवन जब कोरोना का समय था तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा डम थे गेहूँ चावल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। उन्होंने अच्छा किया, फ्री में उसको बांट दिया। फिर उसको बांटने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या, क्योंकि जब डिमांड होती है, जब, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमोडिटी है, फूड प्रोडक्ट है, सब सीजनेबल है। जब सीजन में रहता है तब उसकी डिमांड, जैसे ओनियन है, अब प्याज का है, देखिए एक समय था 1998 या 2000, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनको लोगों ने मतलब महंगाई के कारण दिया, वो प्याज के कारण भी सरकार डूब गई। क्योंकि प्याज जब उनकी डिमांड, जब प्याज जब प्रोडक्शन होता है तो उसकी रेट नहीं रहता, टमाटर जब पैदा होता है उसका रेट नहीं रहता, जब पोटैटो वहाँ पे पैदा होता है उसका रेट नहीं रहता, इतना सस्ते में बिकता है। इवन तो बहुत सारे किसान बेचने और उसको तोड़ने का जो खर्चा होता है वो भी उनका नहीं निकल पाता है, एक एक रुपए में आ जाता है, एक रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बहुत सारे तो तोड़ते नहीं है, बहुत सारे तोड़ते भी हैं तो वहाँ पे इतना कम रेट मिलता है, वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। यही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अब इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखना है कि सेल्फ लाइफ बढ़ा के रखना है, ये ऐसे प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज रहे, जब इसका ऑफ सीजन हो, जब इसकी डिमांड तो बनी रहती है पर उसमें अवेलेबिलिटी नहीं रहती, सीजन उसका खत्म हो जाता है, तो उसमें हमको उसको मार्केट में पुश करना है, तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। तो सेकेंड है लैक ऑफ एडुकेट क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग मेथड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग चाहिए। जो एक इंटरनेशनल मेथड है, जो भी आप पैकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें बहुत सारे देखेंगे आपकी, ये नमक की मात्रा, अब इस साल्ट को भी डाल दिए, शुगर की मात्रा कितनी है, सारी चीज़ें लिखना है। कोई एलर्जी कंपोनेंट है कि नहीं मिल्क या प्रोटीन में, ऐसा कोई चीज़ें, उसको आपको क्लैरिटी लिखना है, पर इसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है, फॉलो लेना पड़ता है, जिसकी भी बहुत कमजोरी, इसलिए ट्रेंड ह्यूमन पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरा है इनसफिशिएंट सप्लाई चेन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी। क्योंकि हमारे इंटरमीडिएटरी क्या है, सरकार ने क्या यहाँ पे पॉलिसी लेके आई थी जिसको बोला जाता था न्यू एग्रीकल्चर लॉ, जो बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। इन्होंने क्या है, कंपनी को दे रहे थे, क्योंकि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके लैंड कैपेसिटी 2 या 3 4 एकड़ रहते हैं, वो ऐसे ही हमारे छोटे लैंड के पॉपुलेशन के फार्मर्स ज्यादा है, और जो फॉरेन में देखेंगे 100 200 एकड़ के फार्मर्स ज्यादा रहते हैं, तो हमारे यहाँ 1 या 2 एकड़ के फार्मर्स ज्यादा रहते हैं, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वो अगर कोई चीज़, अगर नई चीज़ करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उतना पैसे मार्केट में और उतने कम सामान में लेके जाने में बाहर में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जो अमूल का डेवलपमेंट हुआ था, अमूल में जब सरकार उस समय आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में थे, तो वहाँ पे लोग क्या है, क्योंकि जो क्षेत्र है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के आसपास का, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे गर्मी के ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे लोग पशुधन, इवन जो एनिमल फार्मिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गाय भैंस को रखना, तो वहाँ पे दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। बट क्या होता था, उनको कोई पैसा नहीं मिल पाता था, क्योंकि सबके पास दूध है तो दूध खरीदने कौन जाएगा। दूध कहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे शहर है, शहर में लोग गाय भैंस नहीं रखते हैं, उनको बहुत ज़रूरत है, पर दूध वो भी पीते हैं, दूध की रिक्वायरमेंट उनको भी, नीड उनकी भी। तो वो, तो इसी को चैन को कनेक्ट करने के लिए एक इन्होंने सोसाइटी बनाई जिसका नाम अमूल पड़ा, अमूल मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड करके, ये खड़ा डिस्ट्रिक्ट पहले था। तो ये जब सब एक साथ हो गए तो इनके पास में बल्क क्वांटिटी हो गई, ये रेल के रेल बोगियों में वहाँ पे सूरत आनंद से पैक करते थे, एक कंटेनर चलती थी, अब वो जाके मुंबई देते थे, क्योंकि मुंबई में उनको तो मुंह मांगा दाम मिल रहा था, जहाँ पे हम कोई भी दाम नहीं मिल रहा था। इसलिए अमूल इतना, ये जो कॉन्सेप्ट है कि सारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको कनेक्ट कर पाया, जिसको सोसाइटी के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, इसलिए आगे बढ़ा। तो ऐसे ही हमको भी सिस्टम को ऐसे डेवलप करना पड़ेगा, जैसे मिल्क सेक्टर में हुआ, इसलिए आज मिल्क लेबर, मिल्क का जो प्रोडक्शन ऑल ओवर, जो श्वेत क्रांति बोलते हैं, तो ये वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसलिए इतना बढ़ पाया। तो ये ऐसे ही चीज़ें हमको सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम करने की जरूरत है। हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा है एनाडेक्वेट डेवलपमेंट लिंकेज बिटवीन R&D लैब्स एंड इंडस्ट्री। इससे पता है हमारे पास लैब की फैसिलिटीज बहुत ही कम है। अगर आपको प्रॉपर किसी भी, अगर आयरन या किसी चीज़ को आपको टेस्ट कराना हो, तो ये बहुत टफ होता है कि आप इसको टेस्ट करा सकते हैं।
प्रेजेंटेशन मैं आपको बाद में करूँ। ठीक है। सीजनेबल ऑफ रॉ मटेरियल, थ्रेड्स, अफोर्डेबिलिटी एंड कल्चरल प्रेफरेंस ऑफ फूड। अब अफोर्डेबिलिटी क्या है कि जो मार्जिनल लोग हैं वहाँ हमको कम के कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की चीज़ पहुँचाना है, जिसका अफोर्ड है। दूसरा कल्चरल प्रेफरेंस भी है कि कौन वेगन है, कौन नॉन वेगन है, जैनी फूड अलग है, इवन जो मुसलमानों के लिए हलाला फूड से अलग है। तो ये जो कल्चरल प्रेफरेंस का फूड है ये भी ड्रॉबैक भी है, थ्रेड से समझ सकते हैं। हाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बहुत सारे उसके पैसे के बहुत ज़्यादा है। इवन जो टैक्सेशन भी है काफ़ी ज़्यादा है, जो शुरू में होते हैं, जो हैगर स्लैब में 30% में चले आ रहा है। हाई पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मटेरियल रॉ मटेरियल हमारे पास कम अवेलेबल है। सम सेफ्टी मेजरमेंट टू बी टेकन द फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, कौन कौन सी हैं कंपनीज, टू फॉलो द गाइडलाइन लेट डाउन बाय द HACCP। हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP। तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के चीज़ों को गाइडलाइन मेजर को करना पड़ता है, क्योंकि कोई हजार्डियस प्रोडक्ट में है, क्योंकि हम लोग खाने की चीज़ बना रहे हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। तो ह्यूमन को हेल्थ को ध्यान में सबसे प्रथम प्रायोरिटी कि ह्यूमन का हेल्थ जो है मेंटेन रहे, कोई ऐसे कोई डिसीज ना हो, डिसीज कैरिंग कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म से ना जाए, कोई ऐसा हजार्डियस चीज़ ना जिसको लिथल या मतलब इसमें मरने के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए ऐसे कोई प्रोडक्ट्स उसमें किसी भी माध्यम से ना जाए, इसलिए इसको हमको डेवलप करना पड़ता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्लान। इसको एक मेंटेन करना ही एक काफ़ी बड़ी चुनौती है छोटे इंडस्ट्रीज वालों के लिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टलाइज, क्योंकि हम लोग खाने पीने की चीज़ रहती है तो एनवायरनमेंट के साथ में इंस्ट्रूमेंट का भी सैनिटेशन की बहुत जरूरी रहती है। सर्टेन क्लीनिंग नॉर्म्स शुड बी फॉलोड बाय द कंपनीज एंड द वर्कर। कैसे कैसे कंपनी के जो नॉर्म्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे 10 वर्कर्स हैं, एक आपके लेबर डिपार्टमेंट के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उनको PF कटने चाहिए। ये बहुत सारे एक इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। द इंडस्ट्री शुड फॉलो द लॉ इशूड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सारे एडल्ट्रेशन हैं, आपको पता है कि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है, मिर्ची के उसमें होते हैं, ऐसे करीब करीब सभी जगह ऑयल भी है, तो बहुत सारे घी भी हैं आजकल। मीट के साथ मीट के जो चर्बी होती है उसको गला के उसमें एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। बहुत सारे जो सोयाबीन और इसके जो ऑयल्स मिलते हैं, इसमें बहुत अदर टाइप के लो ग्रेड के जो ऑयल्स होते हैं उनको मिक्सअप करके उनको बेचा जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर फॉलोअप चेक करना भी काफ़ी है, इसलिए बहुत कठिन नियम भी बनाए गए ह्यूमन के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी वॉर्न बाय द वर्कर्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कैसे हैंडलिंग तरीके से हैं कि जिसको फटल या फिर किसी को जानलेवा जान के लिए उनको परेशानी ना हो पाए। द इंडस्ट्री शुड बी ओनली एज अ जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कैरी कर सकते हैं फूड प्रोसेस, उसके बारे में गाइडलाइन देना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। फायर ड्रिल शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम टू टाइम सो दैट द एम्प्लॉइज आर प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ इमरजेंसीज। ये बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स हैं। मशीन्स यूज इन द इंडस्ट्री शुड बी सेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, इनको प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी food processing sector. The level of food processing in India are much lower than a most country in the world. well, जो फूड प्रोसेसिंग है बहुत ही लोअर है इन कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज से करें। और इवन when we look at the Asian country and food processing in India is about 10% all the produce that get grown। मतलब हम लोग जितने भी प्रोड्यूस करते हैं उसके ओवरऑल हम लोग 10% ही उसको प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आपके लिए यहाँ पे 90% अपॉर्चुनिटीज है, वाइस वर्सा। सो to that extent there is a big opportunity to look at a more processing in the food processing sector itself, and a large part of this is going to be driven by a growth in the demand from retail as well as the need for a greater convenience. There is a demand for ready to cook, जैसे कि अब मैगी का एक एग्जांपल दिया हूँ, और बहुत सारे रेडी टू कुक राइस आते हैं, सेजवान राइस आते हैं, रेडी टू कुक नॉर्थ इंडियन बनता है, चने की दाल बनती है बहुत ज़्यादा, वो भी रेडी टू कुक बहुत इजीली अवेलेबल है। आप बड़े भी किसी मार्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड द लेवल would be at about 40 to 50%,
And if you look at the size of the food industry to the size of the agricultural industry in India, it is roughly a multiple about 1.5 times the agricultural industries. मतलब जो डेवलप वर्ल्ड है वो 1.5%, मतलब अभी 50% का इसमें भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्कोप बनता है। सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटी जनरली क्या है, 4 सेक्टर्स में डिवाइड की, जैसे कि पहला डेयरी सेक्टर्स है, अराउंड 230 मिलियन टन जो ओवरऑल प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे ग्लोबली इंडिया में, जो कि इसलिए हम लोग सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी हैं। द इंडियन डेयरी मार्केट इज अमंग द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज मैनेज्ड टू अटेन द टॉप पोजीशन इन मिल्क, करीब 5-10 साल से टॉप पोजीशन पे है प्रोडक्शन ग्लोबली, ओविंग टू ह्यूज बोवाइन पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग के पास सबसे लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउएवर द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियन मिल्क हैव स्टिल रिमेन अनअटेन्ड। अभी भी हमारे पास ऐसी संभावनाएं हैं कि जो उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ मिल्क में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जनरली 2, 4, 6 गाय वाले हैं, कि जो प्रॉपर मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, इसलिए उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी एक यहाँ पे सेक्टर है। द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज रिड्यूस 322 ग्राम पर डे, जो कि एवरेज कंट्री जो होना चाहिए, जो कि 293 ऑलमोस्ट बराबर ही है। Changing lifestyle pattern, increasing disposable income, increasing health conscious are the key growth driver for the milk and high value milk products in India. The top of the surging demand, most dairy players have entered the processed dairy segment with introduction to value-added product like ghee, flavored yogurt, butter, and vitamin fortified flavored milk, cheese, etc. The major state of milk production is that UP, overall 18% total, and followed by the Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab. But Gujarat, Punjab में ओवरऑल क्योंकि पॉपुलेशन भी यूपी में ज़्यादा है और बोवाइन मिल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल यील्ड की बात करें तो उसमें गुजरात और पंजाब बहुत आगे हैं। तो अपॉर्चुनिटी डेयरी सेक्टर में कौन कौन से टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट सप्लायर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी इन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल है, कोल्ड चेन की बहुत ज़रूरत है, जैसे रेफ्रिजरेटेड वैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनोवेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस, बहुत अच्छा इनोवेशन पैकेजिंग। अभी इन लोगों ने एक गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है महसाना नाम है, तो महसाना में एक मिल्क आ रहा है टेट्रा पैक की जगह में, टेट्रा पैक बहुत कॉस्टली पड़ता है जो अमूल ताज़ा के रूप में दिखता है, तो उन्होंने एक प्लास्टिक की बनाया जिसमें उन्होंने स्लाइस 3 महीने के लिए मिल्क जो है स्लाइस करके उसमें बेच दे पा रहा है। वो बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत कम कॉस्ट में, पॉलीथीन का ही है पर दूसरा पॉलीथीन है, SDLP नहीं है। तो ऐसा ही इनोवेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन की जरूरत है जो लो कॉस्ट में पैकेजिंग सॉल्यूशन आपको दे सके, ये अपॉर्चुनिटी के रूप में। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर कैटल फीड, बहुत सारे से जो वेस्टेज है हम कैटल फीड के लिए बहुत सारे से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जरूरत है कि अगर हम लोग कैटल को बहुत अच्छा फीड देंगे तो उतना ही अच्छा प्रोडक्शन की उम्मीद भी कर सकते हैं, हम क्वालिटी ऑफ मिल्क की भी उम्मीद कर सकते हैं। न्यू वेटनरी केयर टेक्नोलॉजी एंड कैटल डायग्नोसिस सर्विसेज, जैसे बहुत सारे वेटनरी और टेक्नोलॉजी कैटल डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग उनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो आजकल जो मेल जैसे कि काफ होते हैं, बछड़े होते हैं, और जो भैंस के जो मेल हैं उनकी जो डिमांड अभी खत्म हो गई, क्योंकि ट्रैक्टर का सॉल्यूशन आ गया। पहले क्या उसको किसान लोग, फार्मर्स लोग हल जोतने के लिए करते थे, अब उनकी डिमांड नहीं रह गई। जो मिल्क एनिमल है, जो फीमेल है, जो दुधारू गाय है, मिल्क एनिमल है, उनकी ही डिमांड है। तो हम लोग वेटरी ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे उनके जो कॉल्स के बच्चे होते हैं सिर्फ मेल ही हो, मतलब फीमेल ही हो, जिससे कि मिल्क का हो, क्योंकि उनको कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहता, वो शेटर हाउस में जा रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट विद चीज, स्मूथीज, फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, कसर, इसके के रूप में भी अपन इसको कर सकते हैं। किसी का मैसेज आ रहा है? ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूशन of the fruits vegetable in the world with the production of 256 million ton. India is the world largest producer of banana, papaya, mango, guava, second largest in potato, green pea, tomato, cabbage. India witnessed nearly
Third, fisheries sector. India, with the production of 9.6 million ton, is the second largest fish producer in the world. इसमें भी हम लोग सेकेंड पोजीशन पे हैं, और हम लोग अभी 23% के आसपास उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, मैरीन फूड को, मैरीन फिश को। इसलिए जियोग्राफिकली हमारे पास में जो बाउंड्रीज हैं, 8,118 किलोमीटर जो कोस्टल एरिया है हमारे इंडिया का, तीनों तरफ से हम लोग कोस्टल से बंधे हुए हैं, तो 8,118 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी बड़ा आ, आ, आपको बोल सकते हैं जो मैरीन से जुड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और जियोग्राफिकल एडवांटेज है इंडिया के लिए फिश प्रोडक्शन के टर्म्स में। और इसका 5.5 बिलियन टन के आसपास में वैल्यूड है अपने यूएस डॉलर के रूप में। द मोस्ट एक्सपोर्ट currently are in the frozen form, and there is an immense potential for the exporting value added products। बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अभी हम लोग फिश के बना सकते हैं। फिशरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसको जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस सेक्टर में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फिश में क्या क्या टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सप्लाई में है, अपग्रेडिंग एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन इन पैकेजिंग फॉर द इंक्रीज सेल्फ लाइफ एंड प्रोडक्ट डिफरेंशियल। इनोवेशन पैकेज में जैसे कि हम लोग अभी लास्ट में पहले डिस्कस की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द फिशिंग हार्बर लैंडिंग सेंटर होलसेल मार्केट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब प्रोसेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, पैकेट में, बहुत सारे स्पाइसेस के साथ में, रेडी टू ईट प्रोडक्ट में, रेडी टू ईट कुक प्रोडक्ट के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कंज्यूमर कन्वीनियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम उसको बना के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Potential to process value-added products with the Indian taste like fish, shrimps, pickles, fish, shrimps, curry, skewers, marinated fish with Indian spices। ऐसे हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग सेक्टर के भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास में बहुत अच्छा प्रोसेसिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मीट एंड पोल्ट्री, इंडिया जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक का, और इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 5.3 मिलियन टन ऑफ मीट एंड 30.75 of egg annually। India is the largest producer of buffalo meat and second largest producer of goat meat। India currently processing level in poultry are 6%, while in the meat is stand for 21%। Poultry is a highly vertical integrated industry in India। मतलब वर्टिकल के कहने का क्या मतलब है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, और जब फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं जनरली क्या है, हॉरिजॉन्टली करती है। हॉरिजॉन्टली अगर प्रोडक्शन के रूप में देखें, मतलब जैसे कि आप गाय भैंस से कोई भी चीज़ रखते हैं, या फिर आप खेत लगा रहे हैं, गेहूं का खेत है, कुछ भी है, तो एक हॉरिजॉन्टली एक शेप में होता है। पर ये अगर आप पोल्ट्री के बिजनेस में हैं तो आप लेयर के बाद लेयर के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप इसको एक वर्टिकली भी ऊपर एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस में ऊपर में तो आपको कहीं तक जा सकते हैं, चांद तक भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मल्टी लेयर, जैसे कि वर्टिकल हम लोग आजकल बिल्डिंग बना रहे हैं, वैसे ही इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं कम स्पेस में, जो कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत काफ़ी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप फॉर द मॉडरेशन municipal operation to provide safe and hygienic meat for the consumers। Major state for egg and meat poultry production in India, जैसे कि एग है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में टॉप है। मीट में लार्ज प्रोड्यूसर मीट कंट्री यूपी सबसे पहले इसमें आगे है, हमेशा आगे रहती है यूपी। वेस्ट बंगाल 12% है मीट प्रोडक्शन में, आंध्र प्रदेश है थर्ड पोजीशन पे है, और पोल्ट्री मीट में हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश लीडिंग पोजीशन पे है। अपॉर्चुनिटी मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी सप्लाईज में क्या क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न एबिलेटर जो कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड चेन के लिए कर सकते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो मीट है वो फ्रेश रहे, इसलिए कोल्ड चेन का भी बहुत जरूरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। न्यू वेटनरी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो हाइब्रिड हो, ज़्यादा उसमें मीट कैपेसिटी हो, और उनका जो मीट है टेस्टी है, फ्लैसी हो। फूड टेस्टिंग लैब की भी बहुत ज़रूरत है। पोल्ट्री इंडस्ट्री केयर में क्या न्यू प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जरूरत है, फ्रोजन का, चिल प्रोडक्ट का,
रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट का, इंडियन एथेनिक प्रोडक्ट की स्नैक के रूप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट झींगा मछली इनको भी पोल्ट्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग पाउडर प्लांट एग का पाउडर प्लांट भी लगा सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी है, बहुत सारे यूज़ भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज़ करते हैं एग पाउडर को। न्यू फीड फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सब सेक्टर अपॉर्चुनिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे है, मॉडर्न पैक हाउसेस है फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग फैसिलिटी के भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल क्विक फ्रीजिंग, जिससे कि उसका फ्रेश रहे चाहिए। रेडी टू ईट आइटम्स के लिए, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, फूड लैब टेस्टिंग की बहुत जरूरत है, एंड ह्यूमन पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। टेक्नोलॉजी फॉर न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की काफ़ी यहाँ पे आवश्यकताएं हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और जैसे कि सोलर एनर्जी से भी इंटीग्रेट करके बहुत सारे आप चीज़ों को एनर्जी कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी इंटोवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं न्यू प्रोडक्ट में, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में, ट्रेडिशनल फूड्स में, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो ट्रेडिशनली बाउंडेड लोग हैं, ट्रेडिशनल टेस्ट हमारे टंग के लिए बहुत पैलेटेबल है, बहुत यूजफुल है। तो हम लोग ऐसे ही जो जैसे कि हल्दीराम का जैसे ट्रेडिशनल फूड के नाम से बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो गई, बीकानेर का हो गई, ट्रेडिशनल फूड इनका भी यूएस में एक्सपोर्ट में भी काफ़ी, बाहर कंट्रीज में भी इनका ट्रेडिशनल फूड के नाम से बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर में आप ट्रेडिशनल फूड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और जिसके लिए पहले से मार्केट तैयार है, बस पैकेट फॉर्म में प्रोसेसिंग करके आपको करने की जरूरत है। न्यू पैकेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इनहांसमेंट सेल्फ लाइफ, रिटेनिंग टेस्ट एंड टेक्सचर और टेस्ट को मेंटेन करते हुए ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सब सेक्टर से अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारी स्कीम्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने पहले भी बताया, एमओपीआई की वेबसाइट में आप जाकर देख सकते हैं। मेगा फूड पार्क बहुत जगह है, करीब करीब सभी स्टेट में तीन तीन चार चार मेगा फूड पार्क हैं। वहाँ से टोटल 42 मेगा फूड पार्क हैं, 35 अप्रूव हो चुके हैं। इवन 1200 करीब करीब प्लॉट्स भी हैं, इन बहुत सारे कम बहुत लीज में, बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट में। इवन जहाँ पे आप सिस्टम शुरू करेंगे तो आपको लोन भी वहाँ पे फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उन जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपको बहुत सारे ऐसे लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं सेटिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डालने के लिए, कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, आपके वेयर हाउस के लिए 50% तक की सब्सिडी भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रोवाइड की जा रही है, जिसका भी आप लाभ लेके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपने लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। जैसे कि हम लोग इतनी सारी बातें की हैं, तो इसमें इतनी बातें तो अपने आप क्लियर हो ही जाती है। द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड it a high priority with a number of fiscal relief incentive to encourage commercialization and value addition to agriculture products. This sector have ample opportunity for the youngsters, entrepreneurs, and students. Thank you so much. Questions? Thank you, sir, for this very informative and interesting presentation. मैम And टाइम we ज़्यादा नहीं really लिया आपका, appreciate, मैम sir. टाइम तो ज़्यादा नहीं लिया। आई No, sir, it's fine. The participants are also saying your presentation is great and with very clear explanation. They are applauding your presentation. So, sir, thank you so much. And we appreciate your concern for students, researchers, and entrepreneurs in skill development, as well as addressing the issues of food processing sector. I believe all the participants will enjoy and gain a lot of knowledge through it. So, sir, we wish and send our best wishes to you and thank you very much. कोई क्वेश्चन आंसर दे मैम, सब सुन तो रहे थे। Is there Sir, any everyone questions? is saying very nice and informative presentation. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Moving forward to our next speaker, Dr. Pumi D. Abesundara. Dr. Pumi is the head of the Department of Food Science and Technology, University of Sri Lanka. She obtained her bachelor's degree specialized in food science and technology from the University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka. MSc and PhD in food microbiology from Mississippi State University of the United States, and she is an expert in safety assurance in the food microbiology from Mississippi State University of the United States.
She also is an expert assurance in the food industry and actively involved in food safety training of small and medium-scale food manufacturers across Sri Lanka. Her research studies are focused on evaluating chemical and microbiological safety hazards in food in Sri Lanka. We are indeed very fortunate to have you on board, ma'am. I wholeheartedly welcome you, and I would like to hand over this virtual stage to Dr. Pumi. Over to you, ma'am. Thank you so much. I think good afternoon to everyone. And let me share my presentation. I hope you all can hear me well. Yes, ma'am, we can hear you. All right, perfect. Can you all see my presentation? Yes, ma'am. Perfect. Okay, so very good evening to everyone. I'm Dr. Pumia Besundara, as introduced by our presenter. And thank you so much for the organizers for inviting me to deliver this lecture. And it's my pleasure to be here in this platform today. So today I'm going to discuss about good manufacturing practices for food industry. So, industry being one of the India's largest industry, among today's participants, I'm sure that there can be many participants who are willing to enter to food industry as entrepreneurs. So, the main objective of my talk today is to provide basic understanding about the principles of good manufacturing practices for the future entrepreneurs in food industry. So let's move to our presentation. So what are good manufacturing practices? So good manufacturing practices are a set of principles that help manufacturers to ensure the quality and safety of food products. So as everyone is aware, so today consumers not only they are not just happy with tasty foods. So the food has to be safe. So with increasing knowledge among the consumers, they are seeking for safer food. So therefore, food safety is very important, and these good manufacturing practices are the key component that helps food manufacturers to assure the safety of their final products. So the principles lying behind good manufacturing practices were first formulated by the World Health Organization in 1975, and now it has become one of the fundamental component of any food safety system. For example, ISO 22000, one of very commonly used food safety system around the world. So this good manufacturing practices has become one of the fundamental component of that. So therefore, as future entrepreneurs in food industry, it is extremely important to have a very good understanding about food good manufacturing practices. And within the limited time given today, I will try my best to provide you a good understanding about what good manufacturing practices are and the importance of following good manufacturing practices in food industry. So before we move into good manufacturing practices, first of all, you all have to know something better. Food safety hazards. So what are food safety hazards? So food safety hazards are anything that can cause a harm to the consumer. So regardless of the type of the food or the nature of the food, there can be many food safety hazards, and we can put those food safety hazards into three categories. So these are the three categories: physical food safety hazards, chemical food safety hazards, and microbiological food safety hazards. Then what are
physical food safety hazards. So these are some examples. It can be a piece of metal, a loosened part of a processing equipment, or even piece of hair or a dead fly or something. So these physical hazard can result from accidental contamination or poor handling, food handling practices. So now I hope you have a good understanding about what are physical food safety hazards. Then what are chemical food safety hazards? So chemical food safety hazards are the chemicals that can cause harmful impact on the consumer, such as cleaners, sanitizers, or it can be machine lubricants, or sometimes it can even be toxic metals. For example, if you cook a food, acidic food in an aluminium container, that aluminium can leach into the food, and that can act as a chemical hazard. And even it can be residues of veterinary drugs. For example, suppose that you are talking about chicken, and if the chicken had been given a high dose of hormone, growth hormone, or high dose of antibiotics just before slaughtering, in the carcass there can be hazardous level of that particular veterinary drug, and that can cause a harmful impact on the consumer. So that is a chemical hazard. And or it can be residues of pesticides. For example, let's say brinjal. So in brinjal farming, the pesticide application is very common because it is very prone to different types of pest attacks. So farmers tend to apply pesticides very frequently. So normally in agriculture, it is recommended to have a pesticide-free period prior to harvesting. And if the farmers do not follow that recommended pesticide-free period, you can end up having high concentration of pesticides, which can be hazardous to the consumer. So therefore, chemical hazards can occur. And now I hope you have a good understanding about what chemical food safety hazards are. So chemical hazards can occur at any point during harvesting, storage, and preparation due to different toxic chemicals that are used for pest control, cleaning, sanitizing, like purposes. And toxic, as I mentioned before, toxic metals such as copper, cadmium, lead, zinc can get leaked into food because of the acidic nature of those food. So it can be any chemical. And then biological hazards. Biological hazards occur when food becomes contaminated by microorganisms found in the air, food, water, soil. So it can be a virus, bacteria, fungi, protozoa. So any of these microorganisms, when they get into our body and if they make us ill, we can consider them as biological hazards. Now, I hope you all have a good understanding about what are the three main types of hazards: physical hazards, chemical hazards, and biological hazards. So then why are good manufacturing practices important? So good manufacturing practices are the main topic of today's discussion, right? So why are good manufacturing practices important? So these GMPs helps the food manufacturer to ensure food safety. That means these good manufacturing practices help the food manufacturers to produce a food that are free of those different types of hazards. So that is one important, one benefit that food manufacturer get when they follow good manufacturing practices. They can ensure food safety. And the next benefit that the food manufacturers get by following good manufacturing practices is it support the quality control. It get easier for the food manufacturer to
they maintain the quality of their food, and it helps them to comply their product with the existing regulations. So in any country, there are different regulations that are required by the government to ensure the safety of the food. And if the food manufacturers follows these good manufacturing practices, it becomes easy for them to comply their products to the regulations. And it makes the manufacturers to trace any problem. If anything happen, it makes it, these good manufacturing practices makes it easier to trace the problem down. For example, let's say all of a sudden a manufacturer get complaint from consumers that they got tummy upset after eating their product. And if you have these good manufacturing practices followed, you will easily be able to tackle the problem. You will be able to trace the problem and find the root cause. Okay, and then if you have good manufacturing practices followed, then you can market that. You can say that, okay, we are producing our product under a very controlled environmental condition. So that really makes the consumers to build their confidence towards the food product. And it also helps in reducing waste and cutting the cost down. So these are the main benefits. There are many more other benefits as well, but these are the main benefits if a food manufacturer follow good manufacturing practices that they can get. Okay. Now, while the core principle of food good manufacturing practices remain consistent across the food industry, specific practices and implementation can vary from one manufacturer to another. So I will be discussing about these good manufacturing practices little bit in detail in coming slides. But before we move into those slides, I want to tell you that food industry is a wide, it has many types of industries. For example, it has dairy, it has meat, it has fruits, vegetables, like things. Then it has acidic foods, it has basic foods. So while the principle of good manufacturing practices remain the same across all these different types of food, the key components can slightly vary among different industries. For example, the good manufacturing practices that are recommended for an animal slaughterhouse is different from the good manufacturing practices that are recommended for a bakery. Okay, so therefore, do not think that when I say that good manufacturing practices, it is just one thing, like a list of things that we have to follow, and the list is same for each and every type of food industry. The principles remain same, but the specificity can be different from different industry to different industry. Okay, so good manufacturing practices. Now, since food industry contains lots of types of industries, I am going to take a restaurant as an example to explain to you about good manufacturing practices. Suppose that you are planning to start a restaurant. So these are the things that you can follow. These are the good manufacturing practices that you can follow to improve the safety of your final product. So you have to select the proper location for your industry. For example, we will go one by one in coming slides. You have to have a proper building, properly designed building. You have to have proper way, and you have to know how to correctly store
raw materials. You have to know how to correctly prepare your food. You have to be able to select proper equipment and utensils for your manufacturing processes. You have to know how to what are the good personal hygiene practices, how the food has to be served correctly, likewise. So let's first look at the location. So these are the main things that you have to look for when you are looking for a location for your processing facility. A facility should be located away from any contamination sources. What are the contamination sources? Contamination sources include chemical plants, sewage treatment facilities, salvage yard, livestock housing, likewise. So you have to make sure that your processing facility is away from these kind of contamination source. And then I told you that the building that you are going to use for your processing facility has to be properly designed. That means the building has to be durable. Like the wall, the floor, they must be smooth, and they should permit easy cleaning. The wall should not get chipped. Suppose that the wall is colored, and if the color, the lacquer layer is getting chipped, then it is not good, because if they get chipped, those pieces can end up in your food product somehow, and that can act physical or chemical hazards at some point. So therefore, the building has to be durable. Even the ceiling has to be properly built. If the ceiling is broken, and if they get chipped off or something, then those pieces can somehow end up in the food product, right? In your final food product. So therefore, the building has to be durable. It has to permit cleaning. It has to be easy to clean. That means the surface has to be and they should not absorb water. They should get dry quickly, and it should prevent contaminations. That means you have to even think about the direction of wind flowing. You always have to think about where to place the doors, the windows. So even those things has to be taken into consideration when you are designing the building. And at the same time, you have to think about pest control, because in food industry, you are always going to deal with food, and food is one of the main attract for many type of pests. So therefore, you have to think about preventing pest harborage. You have to always think about what are the possible ways that pest can get it into the processing facility. So then you have to take actions to prevent their entrance. Okay. And then another aspect of good manufacturing practices is raw material storage. So because raw material storage is one of the main points where food can contaminate, food can get contaminated. For example, let's say you store fresh fruits along with thawing meats in the same refrigerator. So the meat juice can get contact with fresh fruits, and when a consumer eat that fresh food, if that meat has got some salmonella, then the consumer can contract salmonellosis. So therefore, proper raw material storage is very important. So you have to make sure that your raw material doesn't get any contamination during storage, and then temperature control is very important. You have to first check what are the raw material that needs to be stored under low temperature. What are the raw materials that needs to be stored under airtight conditions? What are the fruits and vegetables? What are the raw fruits and raw food products? What are the cooked food products? So you have to think about all those aspects when it comes to raw materials, and
you have to when storing. And then first in, first out is another very important principle that can be followed during raw material storage. What does that mean? First in, first out. That means whatever the raw materials you purchase first has to be used first. So therefore, record keeping is very important when it comes to good manufacturing practices in food industry. And then another aspect of good manufacturing practices is how to handle leftover foods. So normally in food industry, it is recommended to discard any leftover food that has been kept under room temperature for more than 2 hours. If you have kept a food in room temperature for more than 2 hours, then it is recommended not to store those food for future consumption. So therefore, you always have to be alert on how long you have kept those food in room temperature. Because what happens is, longer the time that you keep food at room temperature, you are giving more time for microorganisms to grow. So if you have kept it for longer time, that means more likely that the food is going to have high microbial load. And then even if you keep it in the refrigerator, you will not be able to preserve the microbial quality of that food. So therefore, handling leftover food is very important in food industry. So whenever you are storing a leftover food, you have to make sure that you put them in shallow containers and immediately put into the refrigerator covered. You always have to keep them covered. Otherwise, during storage, during the time in the refrigerator, they can get contaminated. And whenever you are using them back, you always have to make sure that you heat them at least up to 74 Celsius for several minutes and then use it. In that way, you can assure that the microbial quality of the leftover food is good and this does not cause any harm to the consumer. And then when it comes to food preparation, these good manufacturing practices are very important. So your manufacturing process, the flow has to be in one direction. So that is one key principle that in food industry, the manufacturers use to assure food safety. Their manufacturing flow has to flow in one direction. Why? If your steps cross in between, you are increasing the chances of cross contamination. So it doesn't have to be one straight line. It just has to be the flow direction has to be one direction. Okay, so in that way you can reduce the chances of cross contaminations. And then when it comes to equipment and utensils, you have to think about their construction. What are the materials that have been used? For example, if you are talking about a cutting board, normally the wooden cutting boards are not recommended for food industry. Why? What is the reason? Because the wood can easily absorb water. Absorb water means it promote microbial growth, and that can lead to microbial contamination, right? So therefore, you have to think about the material that the utensils and machines are made of. And if you are using a plastic cutting board, then you have to make sure that it is not getting chipped easily, because normally you use a cutting board every time with a knife. So if the material is easily damageable, that means that those plastic pieces can get in contact with the food product. The pieces can end up in the final food product. So therefore, you have to think about the material that the equipment and utensils are made of. And then
those equipments and utensils should be easily cleanable, because there are some equipments, some of the parts are very difficult to clean too. Some parts are very difficult to clean. So in food industry, you should not be using those kind of equipment. If the equipment does not allow easy cleaning, you should not even consider purchasing it. Because what happens is, if equipment is not easily cleanable, that means there is high chance of you getting the equipment getting improperly cleaned, and those food pieces can promote microbial growth, and that can cause foodborne illnesses. So therefore, the equipment and utensils have to be constructed with proper material. They have to promote easy cleaning, and they should be durable, because in industry you use it very rough, right? The uses are not very smooth, so they have to be. And then another aspect of good manufacturing practices are personal hygiene. So all the people who are involved in food industry must follow the appropriate level of personal hygiene. It doesn't mean that all the people need to have the same personal hygiene. For example, a worker who is cleaning the raw food material, he needs a level of personal hygiene. And another worker who is cooking the food material will need to have a more level of personal hygiene to be followed, because they are doing two different things. So therefore, it is very important to have a good understanding about the activities that each and every workers follow. In that way, you can decide what are the types of level of personal hygiene that needs to be followed at different level of food manufacturing. And then when it comes to food serving, food must be stored under correct temperature. So that is very important. These are good manufacturing practices. The food must be stored either above 65 Celsius or below 4.4 Celsius. So this zone between 65 to 4 Celsius, we identify them as we identify it as danger zone. So either food has to be stored above 65 Celsius or below 4 Celsius. Perishable food should not be left out more than 2 hours